हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीकेजी आईएएस पीसीएस क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, जो कि सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी से पूछे गए हैं सीडीएस में, यूपीएससी सीडीएस में। पार्ट 4 में 92 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग which of the following statements is are correct, and there are two statements। दो स्टेटमेंट दिए हैं और पहला स्टेटमेंट है इन इंडिया, भारत में द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट इन केस ऑफ राइट्स विच फॉलो फ्रॉम सम अदर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आर्टिकल 32 is applicable for the fundamental rights. So answer statement 1 is correct, and the statement 2 is saying both the Supreme Court and High Courts can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto only for the purpose of enforcement of fundamental rights. This is also correct. So there are 5 writs and they have mentioned number 1 habeas corpus, and number 2 mandamus, number 3 prohibition, and number 4 certiorari, and number 5 is quo warranto only for the purpose of enforcement of fundamental rights. And so answer is C. And the question number 93 is saying in India the right to freedom of speech and expression is restricted on the grounds of, कौन कौन से ग्राउंड्स पे ये रेस्ट्रिक्टेड है। And the ground, there are 4 statements, and statement 1 is saying the sovereignty and integrity of India। ठीक है, ये ग्राउंड सॉवरेनिटी, संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, भारत की अखंडता के आधार पर रेस्ट्रिक्टेड है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी आधार पर रेस्ट्रिक्टेड है। एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन अफेयर्स, यस दिस इज ऑल्सो, एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ये कभी कहीं पर भी मेंशन ही नहीं किया है। ठीक है, तो 1, 2, 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड 4 इज नॉट करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 94 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटर स्टेट काउंसिल आर करेक्ट। ये कह रहा है इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं और देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, कौन कौन से सही है। ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है अंडर द प्रोविजंस एस्टैब्लिश किए गए हैं, तो यस, इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 262। ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 इज सेइंग द काउंसिल इज recommendatory body। yes, council is recommendatory, not binding। and number 3, the standing committee of the council under the chairmanship of prime minister of India to process matters for consideration of the council, ये गलत है। तो 1 and 2 is the correct statement। and question number 95, which one among the following is a function of pro tem speaker of Lok Sabha। pro tem speaker का कौन सा फंक्शन है। ये क्वेश्चन pro tem स्पीकर से पहले पार्ट 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी पूछा गया है 2010 में आई थिंक। एंड देर आर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, ये सही नहीं। टू चेक इफ इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ द members of house are in order, ये भी सही नहीं है। swear in the members of the house and hold the charge till a regular speaker is elected, so answer C is correct। question number 96 is saying the original jurisdiction of Supreme Court of India extends to। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, कहाँ तक एक्सटेंड करता है उसके बारे में प्रोविजंस है।
and there are four options, and the first option is treaties and agreements signed by government of India. नहीं, disputes between the government of India and वन और मोर स्टेट्स। ये आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 के तहत मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर 131 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 97, President of India is elected by a proportional representation system through single transferable vote, means indirect election, and this implies that there are four options. The first option is elected MP or MLA has an equal number of votes। मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। And second option है MPs and MLAs of state have the same number of votes and all MPs and MLAs have one vote each। Yes, this is the correct option, one vote each। Which one among the following is not correct? A special category state in invariably। कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। और एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट इनवेरिएबली, तो इसका आंसर इज हैज लो लिटरेसी रेट। ठीक है, इसकी लिटरेसी रेट कम है, वो एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 99, Question number 99. Despite being a republican state, India is a member of the Commonwealth of Nations whose head is the British monarch. This is because this membership only shows that the British ruled over India। जितनी कंट्रियों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया है, लगभग ऑलमोस्ट मोर देन 50 कंट्रीज, 54 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। ठीक है, तो इंडिया पे भी रूल किया था, इंडिया भी पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। एंड क्वेश्चन नंबर 100, एंड द क्वेश्चन इज सेइंग द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत shall be for 5 years from the date of its first sitting। Second option, issue of notification for the conduct of elections to the panchayat, declaration of elections results, taking oath of office by elected members, its first meeting, पहली मीटिंग से इसका टेन्योर स्टार्ट हो जाता है 5 years का। एंड क्वेश्चन नंबर 100 का ए फॉर आगरा इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 101, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मतलब प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड 4 ऑप्शन से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो इट इज एन एडवाइजरी बॉडी एंड मेक्स रिकमेंडेशंस टू द कैबिनेट। यस, इट इज एन एडवाइजरी। It is responsible for the execution of development programs and plans। नहीं, it is not responsible, I think this is the correct option, and B for Bombay is the correct option। And question number 102, which among the following statements regarding Lord Ripon's plan for local self-government in India are correct? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो प्लान था लॉर्ड रिपन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन। एंड देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग डिस्ट्रिक्ट शुड बी द मैक्सिमम एरिया सर्व्ड बाय 1 कमेटी और लोकल वोट। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है ना रिपन के अनुसार। द लोकल वोट शुड कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स एंड बी प्रेजाइडेड ओवर by an official member as a chairman। ये भी सही नहीं है, दोनों करेक्ट नहीं है, तो neither one nor two, we will go for D for the LA। and question number 103,
The question is saying which of the following features is are contrary to the norms of फेडरल पॉलिटी. फेडरल पॉलिटी के जो नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट में प्रोविजंस कौन कौन से हैं ये कह रहा है. कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज इज आर contrary टू द नॉर्म्स ऑफ फेडरल पॉलिटी. ठीक है. एंड देयर आर टू स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेकेंड इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी. तो दोनों ही सही नहीं है इसके लिए. तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 104. 104 the question is saying the civil liability of nuclear damage bill passed in the Lok Sabha on August 2010 does not make provision for. मतलब 2010 में एक सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल प्रस्तुत किया गया लोकसभा के अंतर्गत. तो उसमें जो प्रोविजंस थे उनमें से 4 स्टेटमेंट्स हैं. कौन सा प्रोविजन नहीं था. ठीक है. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लेम कमीशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ क्लेम्स कमिश्नर. यस. अ लायबिलिटी कैप ऑफ 1500 करोड़ ऑन एन ऑपरेटर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट. एंड C. A liability cap of 1500 crore also on the government of India in case of an accident. This is the correct statement according to the civil liability of nuclear damage bill 2010 के अनुसार. क्वेश्चन नंबर 10 है which of the following statement regarding rate of सरसोराजी is correct. ठीक है. रेट 5 प्रकार के होती हैं सरसोराजी. जो फोर्थ रेट है उसके अनुसार कौन कौन से प्रोविजंस 2 स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ठीक है. एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर शुड बी कोर्ट ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन द क्वेश्चंस ऑफ डिसाइडिंग फंडामेंटल राइट्स विद द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियसली. ठीक है. ये प्रोविजंस नहीं है. सरसोरारी में है कि हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी लोअर कोर्ट में चल रहे अंडर प्रोसेस जजमेंट को क्वैश भी करा सकता है, ट्रांसफ़र भी करा सकता है. ठीक है. पार्टीज को रिलीफ दिलाने के लिए. अगर आप सरसोरारी रेट के अंदर अगर रेट डालते हो हायर कोर्ट में तब. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. एंड स्टेटमेंट 2 इज द रेट ऑफ सरसोरारी इज अवेलेबल ड्यूरिंग द टेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स before a subordinate court. Yes, during the proceedings. So option 2 is the correct statement. And question number 106. Which one among the following statements regarding the constitutionally guaranteed right to education in India is correct? The rights cover both child and adult illiteracy and therefore universally guarantees education to all citizens of India. नहीं. दिस राइट इज a child right covering the age group of 6 to 14 years and becomes operational from the year 2015. ये गलत बात. 2015 से ऑपरेशनल नहीं हुआ था, उससे पहले हुआ है. ठीक है. दिस राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन which was the first welfare state in the world. ये भी गलत है. दिस राइट हैज बीन गिवन टू ऑल इंडियन children between the age group of 6 to 14 and years under the 86th Constitution Amendment Act 2000. I think 2005 के 2002 के आई थिंक 86th Amendment Act 2002 के आधार पर 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एज राइट टू एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया, फ्री. एंड क्वेश्चन नंबर, ये कोर्स हैं. इस कोर्स के आधार पर क्वेश्चन 107 108 डिस्कस करेंगे. एंड 107 का स्टेटमेंट फर्स्ट. एडजॉर्नमेंट इज अ शॉर्ट नोटिस रिसेस विद इन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑर्डर्ड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिस ऑफ द. एडजॉर्नमेंट के दौरान क्या है
कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एडजॉर्न कर सकता है सिटिंग लोकसभा की सिटिंग के लिए विद अ डेफिनेट पीरियड। डेफिनेट पीरियड का मतलब होता है कि एडजॉर्न करने को तुरंत बाद ही बताएगा कब सिटिंग कब हेल्ड होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड इज व्हेन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एडजॉर्न द हाउस विदाउट फिक्सिंग एनी डेट और टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग of the house, it is known as adjournment sine. Yes, this is also right, but both the statements are right, but statement second is not the correct explanation of statement first. ठीक है, and statement first 108 question 108 का statement first is saying by virtue of a law passed by Parliament of India in the year 2003 में एक लॉ पास हुआ। The people of Indian origin residing in 16 countries enjoy dual citizenship status। ठीक है, dual citizenship status enjoy करते हैं। And question number second, this law enables them to participate in economic activities, cast their vote or get elected to various legislative assemblies और legislative bodies in India। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट कांट कास्ट देयर वोट इन इलेक्शंस। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो विल गो फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स बिकॉज दे कैन नॉट वोट इन द इलेक्शंस, दे कैन participate in the economic activities। We will move to question number 109। Question number 109 is saying statement first, the fundamental rights protect the rights and liberties of the people against the encroachment by the legislative assembly and executive wings of the government। ठीक है, and fundamental rights guarantees the rights of citizens। कह रहा है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल अगेंस्ट एनक्रोचमेंट बाय द गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड फंडामेंटल राइट्स guarantee rights of citizens। Yes, both the statements are right and we will go for the options, and both the statements are right and स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। मतलब 109 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है equality before law is not applicable to president of India। Yes, is the correct of statement, and statement second is the president of India enjoys some special privileges under the Constitution of India। Yes, he enjoys the special privileges। इसका 110 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चेक कर लेना पीछे बैठ में। एंड 111 which of the following provisions of the Constitution of India need the ratification by legislation of not less than 1/2 of the states to effect amendment। ठीक है, तो there are 4 statement, कौन कौन से provisions ऐसे हैं। तो the manner of इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें कंसेंसस चाहिए मोर देन 50%, नॉट लेस देन 1/2 मतलब नॉट लेस देन 50% स्टेट्स। ठीक है, ये प्रोविजंस है
अगर इलेक्शन मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट चेंज किए जा रहे हैं बाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो रेटिफिकेशन चाहिए नॉट लेस देन 50% ऑफ स्टेट्स। एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स का जो एक्सटेंशन हो रहा है एग्जीक्यूटिव पावर का, उसमें भी नॉट लेस देन 1/2 स्टेट्स टू इफेक्ट अमेंडमेंट रेटिफाई करना होगा स्टेट्स के लिए। एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अगर एक्सटेंड किया जा रहा है तब भी यही होगा। एंड एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 112, which of the following statement with respect to the judiciary in India are correct? Judiciary से related questions है, and there are 3 statements given in this question. And the first statement is saying, unlike in the United States, India has not provided for a double system of courts. Unlike in the United States, India has not provided for a double system of courts. Yes. And state number 2 is saying, under the Constitution of India, there is a single integrated system of courts for the union as well as states. Yes, there is a single integrated courts, and the apex court is Supreme Court, and फिर हाई कोर्ट्स है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, फिर लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है। एंड statement 3 is saying the organization of subordinate judiciary varies slightly from state to state. Yes, all of these statements are correct. And question number 113. And question number 113 is saying, consider the following statements about the powers of the President of India. And there are 4 statements. The President can direct that any matter on which the decision has been taken by a minister should be placed before the Council of Ministers. अगर किसी मिनिस्टर्स ने डिसीजन ले लिया किसी मैटर पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने प्रस्तुत करना होगा। दिस इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट हो गया। 1 एलिमिनेट करते ही ए में ऑप्शन 1 है तो ये नहीं होगा, बी में भी ऑप्शन 1 है, डी में भी ऑप्शन 1 है, तो 2, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन कॉल ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, यस। एंड ऑल डिसीजंस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू प्रेसिडेंट, यस। एंड क्वेश्चन नंबर 114. And the question is saying there are different arguments given in favor of power sharing in a democratic political system, ठीक है। और इससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस दिए हैं। Arguments given in favor of power sharing in a democratic political system. It reduces conflict among different communities, and majority community does not impose its will on others. Yes. डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी पे अपनी जो बिल है वो इम्पोज नहीं करेगी। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. सॉरी, पहला ऑप्शन है 6 years, बी ऑप्शन है ड्यूरिंग द प्लेज ऑफ प्रेसिडेंट, एंड सी फॉर 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years whichever is earlier. This the option C for Calcutta is the correct option. And next question is, which of the following committees are the committees of Parliament? पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स दिस इज ऑल्सो पार्लियामेंट्स कमेटी। तो 1, 2, 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स।
and 117 according to Administrative Tribunal Act 1985. The Central Administrative Tribunal adjudicates disputes and complaints with respect to the service of persons who are, ठीक है, related है Administrative Tribunal Act 1985, and the Central Administrative Tribunal adjudicates disputes and complaints with respect to service of persons who are appointed to service and post in connection with the affair of union except members of the defense services. This is the first option, and this option is the correct option. Post in connection with the affairs of union except members of the defense services. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 118. With reference to conduct of government business in Parliament of India, the term closure refers to suspension of a debate at the termination of day's sitting of Parliament. Closure का मीनिंग होता है सस्पेंशन ऑफ अ डिबेट एट टर्मिनेशन ऑफ डेज सिटिंग. उस दिन की जो सिटिंग से टर्मिनेट हो रही है तो उसे क्लोजर बोलते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 119. In which one of the following cases the Supreme Court of India gave the verdicts which have direct bearing on the center-state relations? तो SR पोमई केस से रिलेटेड है ये जजमेंट सेंटर स्टेट रिलेशन का. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Question number 120. Which of the following are envisaged as being part of the right against exploitation in the Constitution of India? And there are 4 statements. And first statement is saying prohibition of traffic in human beings and forced labor, right against exploitation in the Constitution. This is the right. And evolution of untouchability, ये आर्टिकल 17 में दे रखा है तो ये एक्सप्लॉइटेशन का नहीं. एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये भी नहीं, ठीक है. प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस, दिस इज द पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24, ठीक है. 1 and 4 is the correct option. We are ending this video here only, and please subscribe to the BKG Spaces Classes YouTube channel and share the video with your friends, and like, share the videos and comment if appropriate, you find the content appropriate. Thank you.